हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैन ऑफ एरिस्टोटल। फ्रेंड्स, प्रथम भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मुझे बहुत बहुत सॉरी मागुची, कारण मु भिडियोटी जो कही कि कंटिन्यूअसली छाड़मी किसी प्रोब्लेम छाड़ी पानी मोर एग्जाम थिला, तेणु बहुत सॉरी। बर्तमान ठार आमर एवं कंटिन्यूअसली भिडियो छड़ा +3 आउ +2 क्लास करा पॉलिटिकल साइंस। तेणु भिडियोटी सब्सक्राइब करूँ आम चैनल टी आ बेल आइकन दबातु, जमीक भिडियोटी आप नोटिफिकेशन पड़े आप मैंने क्लास करेंगे। तेणु मुझे मिनिमम मसे है भिडियो छाड़ी पार नी आम एजुकेशनल ये आमर, कारण पीजी एंट्रेंस थिला। नेक्स्ट आम जो आम ये भिडियोटी आम जो पीजी एंट्रेंस अच्छी तार जो क्वेश्चन मो पाखे पहुँची से क्वेश्चन आंसर सीट आम बाहर करवा। हाँ, जदि आप पीजी एंट्रेंस देते आपको आंसर सीट आदि मिल पारती। आम भिडियोटी बिना डेरी नक स्टार्ट करवा। फास्ट आंसर क्वेश्चन देखिए। फास्ट क्वेश्चन आसतु, हुज स्टेटमेंट इज दिस, हाउएवर यू आर और वांट टू बी, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। किए कहते जिते माने जिते बेले हो तुम पॉलिटिक्स सहित इंटरेस्टेड नथिबो इनक्लूड नथिबो पॉलिटिक्स माने माने कोन पॉलिटिक्स रे इनक्लूड नथिबो चाहू नथिबो बी रहिया पे, किंतु पॉलिटिक्स तुम मध्य इंटरेस्टेड थिबो। पॉलिटिक्स तुम जिते पॉलिटिक्स दूर रह पॉलिटिक्स तुम पाखे पहुँची जाव माने आ माने किए कहते ना मार्शल हावर्ड बर्गमैन। एटा आंसर होची 1। जदि आंसर एक नंबर माथिबे ताले ए माथिबे 1 नंबर ए ताले एटा एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आसो सेकंड क्वेश्चन कोन दला, इन हुज ओपिनियन द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द सेक्योर रिसोर्सेस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स एंड द यूज द वर्ड्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। किए यूज करथिले वर्ड माने पॉलिटिक्स की डिफाइन करिया को हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये होचंती लास्ट ट्वेल्व कहते हिस्ट्री लास्ट ट्वेल्व। आंसर होची बी। आंसर कौन बी। आपण मान जब बी माथिबे आंसर टी एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आसो, whenever state exists there is politics but the converse is not true, that whenever politics exists so does state। माने से कोन कहथिले जत्ते बेले भी स्टेट रही पॉलिटिक्स सेठी रहइबो, किंतु एटा जो भले सत्य जो कन्वर्सटा जो भले सत्य से भली जत्ते बेले पॉलिटिक्स अच्छी स्टेट रहिबो बोली किछि माने नै। किए कहथिले ना लिस्टन कहथिले। जदि आपण आंसर ए माचंती ताले आंसर टी 3 ए ठीक अछि। नेक्स्ट आसो 4 नंबर क्वेश्चन को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज। देखो ये गोटे मैंने कन्फ्यूज छुआ मारी दिखती कि राउरकेला एक्ट, कारण राउरकेला एक्ट 1919 होता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को राउरकेला एक्ट कहते नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को कौन कहते मॉन्टेगू चेंजफोर्ड रिफॉर्म। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पागे पढ़ी थे ताले हम मॉन्टेगू चेंजफोर्ड रिफॉर्म। आंसर होची सी। नेक्स्ट आसो, हु इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिसेंबर 13, 1947। किए आमर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रहा किए इंट्रोड्यूस करते ना आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते। आंसर होची डी। जब आंसर आप डी मार्के ताले एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आसो, हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर किए इंडिया रे ना लॉर्ड रिपन। आंसर होची लॉर्ड रिपन। आंसर होची ए। सी जे कि आमर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन देते ताको मागना काटा कराउतला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मागना काटा पढ़ी ताले आंसर होची 6A। नेक्स्ट आसो 7 नंबर देखो यहाँ आगे क्वेश्चन देखो 7 नंबर, हुज एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस अपोज टू द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस बाय द स्टेट फॉर एनी पर्पस। तार ये एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस जोटा देखा है एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस माने एटा होची रॉबर्ट नजिक, कारण नजिक देते एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस। आंसर होची बी। नेक्स्ट आसो, हु सेड इनजस्टिस अराइज व्हेन इक्वल आर ट्रीटेड इक्वली। सॉरी, हु सेड इनजस्टिस अराइजेस व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वल। किए कहते माने इनजस्टिस से हम जो इक्वल लोक अनइक्वल ट्रीटेड हम यहाँ किए कहते देखो आमर अरिस्टोटल कहते। अरिस्टोटल देखो आम आगे बुझिया जो अरिस्टोटल फास्ट कौन कहते जस्टिस कौन कहते से जो जस्टिस डिफाइन करते कहते जस्टिस इज व्हेन इक्वल ट्रीटेड एज इक्वली एंड अनइक्वल ट्रीटेड एज अनइक्वली। अनइक्वल जे से अनइक्वल ट्रीटेड है, इक्वल जे से इक्वल ट्रीटेड है। सेटारू यहीटा आईसी जो आम कनसेप्ट है जो कनसेप्ट आई इनजस्टिस अराइज व्हेन इक्वल आर ट्रीटेड अनइक्वली। इनजस्टिस से आसो जो इक्वल माने अनइक्वल ट्रीटेड है, अनइक्वल माने इक्वल ट्रीटेड है। नेक्स्ट आसो अरिस्टोटल डी माथिबो आंसर टी राइट। नेक्स्ट आसो देखो ये क्वेश्चन तुम कन्फ्यूज करने बहुत 9 नंबर क्वेश्चन ये करके देखो द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन एज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। जो देखो आम जो ह्यूमन एक्शन को सेल्फ रिगार्डिंग माने कौन जोटा
ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ହାର୍ମ କରୁନଥିବ, ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଲ୍ଫକୁ ନେଲେ ଧର ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ କି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛେ, ସେଇଟା ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ହାର୍ମ କରୁନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଦର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅନ୍ୟକୁ ହାର୍ମ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେଲ୍ଫ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନିଜକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରୁନଥିବ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଓନ୍ଲି 4। ନେକ୍ସଟ ଆସ, if a party win 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different states, it is recognized as, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି 2% ସିଟ୍ସ ଲୋକସଭାରେ ପାଇବ ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର କ'ଣ ଜିତିଥିବ ବା ଜିତିଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି କୁହାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ମାରିଥିବେ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣ ଆସଲୁଟଲି ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସ, ଦେଖ, in which year the parliament passed the 52nd amendment act for checking the practice of political defection। जो देखो प्रथम पॉलिटिकल डिफेक्शन आप जब यहाँ मैंने बागे देखी थे कौन इंडियन पॉलिटिक ताल जापर पॉलिटिकल डिफेक्शन कौन आगे देख पॉलिटिकल आम दल बदल जो गोटे दल जीतिक अन्य दल को मैंने जो दल बदल कराई पॉलिटिकल डिफेक्शन कहला के 52nd amendment 1985। आंसर हो 11 नंबर बी। जदि आप मैंने बी मारी आंसर टी आसुटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आस, in 1938 when the union government tried to establish Hindi as a national language, anti-Hindi movement was started in Tamil Nadu under the leadership of, देखो ये क्वेश्चन टा कन्फ्यूज होची तेणु ये क्वेश्चन टा हो पारिबने एटा मु देखिले वीडियो रे आपण माने जणाय चेष्टा करिम। क्वेश्चन टा माने एटा बही रे गोटे जगह लिखाई छि जणे आ जणे लिखाई छि हमर रामसिंह गोपचारी लिखाई छि बहुत जगह एमती प्रॉब्लम अछि तेणु ए वीडियो टी ए नंबर टी ठीक है साइड रख। नेक्स्ट आसो, who pointed out the two important trends on caste in India, the process of Sanskritization and Westernization। हम Westernization और Sanskritization जो रहा कनसेप्ट किए ये करथिले कास्ट इन इंडिया रे, हां एटा होचे एम.एन. श्रीनिवास। जदि आपण माने डी आंसर माथिबे ताले आंसर टी एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आसो, in 1989 who was the prime minister of India to implement the recommendation of the Mandal commission for reservation of jobs for the OBC in public sector। ओबीसी मान जो पब्लिक सेक्टर जॉब दिया तो किए ये करते मंडल कमिशन में 1989। आम 1989 में किए प्राइम मिनिस्टर थे आम राजीव गांधी थे तेनाली आंसर होचे ये राजीव गांधी। मंडल कमिशन भी राजीव गांधी अंडर बसला आंसर होचे ए। नेक्स्ट आस, व्हिच ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंपेयर द फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिमेरिट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माने आमाने कोन देखो आमर को पॉलिटिकल साइंस तो को ब्रांच रे आमर जो कंपेयर्स द फीचर एडवांटेज सब किछि जो पॉलिटिकल साइंस रहला स्टॉप माने कोन डिटरमाइन द बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल माने स्टडी कराई कि ताको बेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तयारी करबा नै करछि। एटा होछि हमर एब्सोल्युटली कंपैरेटिव गवर्नमेंट हम हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट रे हमें माने कोन सब दिन को माने एनालाइज करा जाय कि गोटे बेस्ट दिन बाहर करा होछि तेनु आंसर होछि डी। नेक्स्ट आसो, which approach is concurred with the study of the formal political structure like legislature, executive and judiciary। हम जो formal education formal political structure जो organization रहला ताकू के माने इंस्टीट्यूशन रहला ताकू जो अप्रोच रे ये होची ताकू की अप्रोच कहला स्टडी करा जाय। जो अप्रोच ताकू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रे देखि दिबो ताला इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का करे प्रथम इंस्टीट्यूशन कहते जो इंस्टीट्यूशन का कहते फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जोटा कि माने ऑफिशियली तयारी है पॉलिटिकल ये रे ताकू कहला फॉर्मल पॉलिटिकल अप्रोच इंस्टीट्यूशन सेटा होची इंस्टीट्यूशन अप्रोच रे कहै छी। नेक्स्ट आसो, whose political communication approach lay emphasis on that one part of the system affect another by sending message or transmitting। एटा भी टिके क्वेश्चन टा बहुत माने वर्तमान आंसर नै तेनु नेक्स्ट वीडियो बुझबे ए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, who is an advocate of the structural functional approach। देखो एट क्वेश्चन टा टिके ये अछि माने बहुत पिला डेविड स्टोर मार दियंते किंतु एक्चुअली स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और इनपुट आउटपुट अप्रोच बहुत डिफरेंस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच होछि आलमंड करो इनपुट जो आम डेविड स्टोन करो इनपुट आउटपुट तेणु आलमंड आंसर हो सी। जे आप आंसर मार्चन सी तेणु आसुटली राइट। नेक्स्ट आस, हु इज जनरल रिगार्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर बोली जाना जाती ना एडोल टेलर। नेक्स्ट आस, हु रोड द बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव। आम मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव किए लिखिते टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर हो किए लिखिते ए फ्रैंक मार्नी। फ्रैंक मार्नी जो आंसर लिखिछन ताले एब्सोल्युटली राइट। व्हिच थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज एडवोकेटेड बाय एच कार जॉर्ज केनन रिहैंड नेबुआ।
एंड एच जे मागंथु किए ये जो आम फिलोसफर रहा कौ टाइप फिलोसफर ना क्लासिकल रियलिज्म आंसर हो क्लासिकल रियलिज्म नेक्स्ट आस Politics is governed by objective laws which have roots in human nature is principle and they magadu realism theory ये जो हमारे ऊपर जो नेचरटा रहा हाथ magadu आम जो 6 नेचर देते रियलिज्म थियोरी तार जो नेचरटा रहा पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज व्हिच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर ये जो प्रिंसिपलटा रहा एटा केते नंबर प्रिंसिपल ताकर एटा हो एक नंबर प्रिंसिपल तेणु 1 नेक्स्ट आस नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का न्यूलिस्ट थियोरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय इन हिज बुक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आम जो थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अच्छी ये बुकटी कार ना केनेथ एन वाल्टज जे कि आम न्यूलिस्ट फादर थे न्यूलिस्ट ऑफ थियोरी ऑफ फादर थे नेक्स्ट क्वेश्चन आस The concept of political gas is that it is a state of attitude, belief and orientation of the people towards the political system. এটা কি কইলে না এটা মানে কোন जोटा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल gas is that it is set of attitude, belief or orientation. এটা হচ্ছে कल्चर কোন कल्चर হবে आंसर হচ্ছে ए नेक्स्ट आस which approach takes into account the norms and the informal practice that shape the functioning and evolution of institution in various ways. हमारे तो गोटे क्वेश्चन आंसर करते हैं जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को ये करता स्टडी करता ऑर्गेनाइजेशन को कहला इंस्टीट्यूशनलिज्म तापर जो इंस्टीट्यूशनलिज्म तार मॉडर्निटी आसला तार न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आसला जोटा कि फॉर्मल इनफॉर्मल नॉर्म्स ये सब स्टडी कराला एटा होचे न्यू इंस्टीट्यूशनल तेणु आंसर होचे बी नेक्स्ट क्वेश्चन आस द वोटिंग मेथड इज वन इन व्हिच वोटर्स इंडिकेट ऑन ए बैलेट the candidate of their choice and the candidate who receive the most votes win known as जे माने गोटे एटा जो ए जो वोटिंग टाइप रो एटा टाइप ऑफ वोटिंग इन सब सिस्टम क्वेश्चन देतला जो टाइप रे माने कोन करंती ना वोटिंग माने ताको चॉइस देबे आ हाईएस्ट चॉइस जे या करियो से जितबो एटा होची फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आंसर होची सी नेक्स्ट आसो who define policy as the output of the political system and public policy देखो आउटपुट अच्छी इनपुट आउटपुट थ्योरी के देते डेविड स्टोन हाँ तापर द अथॉरिटी अलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द होल सोसाइटी किए कहते ना डेविड स्टोन आंसर होची ए नेक्स्ट आसो हु फेमसली सेड पब्लिक पॉलिसी व्हाट एवर ए गवर्नमेंट चॉइसेस टू डू और इवन नॉट टू डू किए कहते एटा किए कहते ना ए आंसर होची ए नेक्स्ट आसो which public policy renders good and service and also distribute their cost among this member एटा होची आंसर बी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी नेक्स्ट आसो व्हाट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज among the nation एटा होची आंसर होची डी ग्लोबलाइजेशन आपण जदि आंसर डी माचन तले आंसर एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट आसो द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज कंक्लूडेड ऑन जुलाई 1 एटा होची आंसर बी 1968 आम एनपीटी होता नेक्स्ट आस द आइडिया ऑफ राजधर्म इज मेंशन इन शांति पर्व आंसर होची ए राजधर्म शांति पर्व मेंशन अच्छे फतुआ ई जहांगीर इज वर्क ऑफ फतुआ ई जहांगीर कार वर्क जियाउद्दीन बोरान आंसर होची ए आप जो आंसर ए माचुन तले एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट आस whose foreign policy office the theory that an immediate neighboring state is an enemy and a neighbors separate from oneself by the intervening enemy is a friend किए कहते ना कौटिल्य कहते कौटिल्य सप्ताह कहते नेक्स्ट आस Rousseau felt that social living corrupted us leading to such ill as private property and social of the following is his famous phrase arising from this reasoning किए कहते 35 नंबर किए कहते 35 आम कहते डी ना सॉरी एटा कौन माने ना डी मैन वाज बोर्न फ्री बट हिज एवरीवेयर इन चेन नेक्स्ट आस It is better to be human being dissatisfied than a pig, better to be in Socrates dissatisfied than a fool satisfied. एटा किए कहते एटा लास्की कहते किए लास्की आंसर होची ए नेक्स्ट आस द हाई कास्ट हिंदू वुमेन इज रिटन बाय जो हाई कास्ट हिंदू रहा किए का द्वारा रिटन होची पंडित रामाबाई आंसर होची सी in which year Swami Vivekananda gave the famous speech in the World Parliament of Religion in Chicago को year रे पार्लियामेंट रे स्पीच देथिले जो रिलीजन पार्लियामेंट चिकागो रे हमर एटा होची 1893 से जाइले अमेरिका चिकागो एंड हेटी हमर दांग स्पीच देथिले नेक्स्ट आसो हिंदुत्व इज द इंपोर्टेंट वर्क ऑफ जो हिंदुत्व रहला कार इंपोर्टेंट वर्क ना सावरकर बीडी सावरकर हिंदुत्व नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय हम जो 4 पिलर स्टेट रहला का द्वारा एडवोकेटेड हेची एटा होची राम मनोहर लोहिया का द्वारा राम मनोहर लोहिया को द्वारा एडवोकेटेड हेची इन व्हिच ईयर वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा को ईयर वुमेन वोट पाया पे ये हले 1921
Next also, Mary Wollstonecraft, which book was the first text of modern feminism that campaign for women's right to vote, female suffrage. आम जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट को बुकटा प्रथम आईला जो कि वुमेन मान आईला मॉडर्न फेमिनिज्म उपर ये होची विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. आंसर होची डी. आप जो आंसर डी मैच तो एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट आसो, जॉन स्टुअर्ट मिल विथ हैरियट टेलर रोट ए बुक दैट प्रपोज्ड पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ वुमेन इक्वल टू मेन. जो आम जॉन स्टुअर्ट मिल रही हैरियट टेलर रही मिसिकी गोटे बुक लिखते से बुकटा ना होची कौन ना द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन. नेक्स्ट आसो, which book of Betty Friedman marked the resurgence of liberal feminist thought in the 1960s during the second wave feminism. आम जो बेटी फ्रीडमैन रही आम जो लिबराल फेमिनिस्ट थे सी जो बुकटा लिखी सेकेंड वेव टाइम कौन लिखी यहाँ हूँ आंसर ए, द फेमिनाइन मस्किटो. नेक्स्ट आस, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड हैरियट टेलर मिल आर फेमिनिस्ट. डैश टाइप ऑफ फेमिनिस्ट, ये कौ टाइप ऑफ फेमिनिस्ट मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ये लिबरल. नेक्स्ट आस, आंसर होची ए. आंसर होची ए तो बहुत ठीक. नेक्स्ट, व्हिच बुक ऑफ समन डे बिहेवियर ड्रॉ अटेंशन टू द पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल ऑपरेशन. एटा आंसर होची कौन ना सी, सब्जेक्ट द सेकंड सेक्स. कौन आंसर होची सी, आंसर द सेकंड सेक्स. हु इज द इंडियन फेमिनिस्ट ऑथर रोट स्टेइंग अलिव इन 1988 दैट हेल्प redefining the perception of third world women. किए लिखी ना सॉरी ये किए लिखी स्टेइंग अलिव वंदना शिव. किए लिखी वंदना शिव. According to Margaret Benson and Peggy Morton, in the capitalist system, two types of labor exist and these are the two types of capitalist मतलब exist करते two types of कौन labor से हो productive and reproductive. Next आसा, who was the Kenyan eco-feminist and recipient of Nobel Prize in 2004, set up the Green Belt movement in Kenya in 1977. आम किए जो नोबेल प्राइज पाई केनिया इको-फेमिनिस्ट है कन्फ्यूज हम वांगेरी मैथड. नेक्स्ट आस, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय व्हिच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड इज नोन एज. आम जो प्रोसेस देख प्रोसेस आइला कन्फ्यूज हम तुम बहुत पिला गवर्नमेंट मारी गवर्नेंस मारी कन्फ्यूज होती गवर्नमेंट और गवर्नेंस भितर कन्फ्यूज होती कि आंसर हम ए. आंसर हो कारण governance is a process, not government. Government is an institution, a organization. Governance is a process. Answer A. Next also, who defined governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economy and social resources of a government. এটা কি কইতলে না World Bank রে কই দিতলা. Next also, dash refer to application of information and communication technology for delivering government services, exchange of information, communication, transaction, integration of various system. जो डेवलपमेंट एरिया रे जो ये हो सब इलेक्ट्रोनिक और एटा सब देछि तेनु एटा हो ई गवर्नमेंट. सी आंसर हो सी. आंसर हो सी. Which commission in 1987 defined sustainable development as development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. किए कहते किए कहते डेवलपमेंट which meets को कमिटी अंडर होता ना एटा हो सी. आंसर हो सी. को कमिटी आंसर हो सी, ब्रूटलैंड कमिशन. नेक्स्ट आसो, the measure of life expectancy, literacy, education and standard of living for countries worldwide is known as. आम जो वर्ल्ड वाइड रेट कहला देख से ह्यूमन पड़ेगा आम जो ह्यूमन आम लिटरेसी बढ़ुची, एजुकेशन बढ़ुची, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ुची कौ इंडेक्स मैं पाऊँ कौ अंडर ग्रोथ देख कन्फ्यूज हम ग्रोथ कि ग्रोथ नुह ग्रोथ हम नहीं कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट भर बहुत डिफरेन्स अच्छी तेणु यहाँ आंसर हम डी. आंसर हम डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. आप डी मारे आंसर एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट आस, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया. को कमिटी पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया रे इंट्रोड्यूस कर. आंसर हो सी, बलवंत मेहता कमिटी. नेक्स्ट आस, नेक्स्ट कौन देखिए, ए डॉक्यूमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश फॉर पब्लिश रिफरेंस एंड व्हिच प्रोवाइड डिटेल अबाउट नेचर वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज. कौन हम सिटीजन चार्टर. आंसर हो सिटीजन चार्टर. नेक्स्ट आस, द राइट टू इनफर्मेशन एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 12 अक्टोबर. जो आम राइट टू इनफर्मेशन एक्ट है के फोर्स है 12 अक्टोबर कौ मसीह यहाँ हूँ 2005. आप 2005 सी मार्च. आंसर इज राइट. Dash is a management concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operation and interaction with their stakeholder. এটা কম হবে না কোঅপারেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি. आंसर है बी.
Gandhiji wanted a suitable term to name his new technique of resistance satyagraha and gave an advertisement in the following magazine for suggestion. को magazine से suggestion देते इंडियन ओपिनियन magazine उधर इंडियन ओपिनियन magazine एटा दुटी तरह साहित्य प्रिय था कि एटा लिखिते. नेक्स्ट आसो. According to Gandhi, dash is moral weapon, a passive resistance and a political weapon. एटा आंसर होची सी नॉन भायोलेंस आंसर होची सी. हमर जदि आंसर सी माचन तले एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट आसो. नेक्स्ट कोन तला. In the technique of satyagraha, the term dash implies voluntary exile from one's permanent place of habitation. एटा किए कहते हिजरत. एटा कोन हिजरत हिजरत कोन एटा हिजरत आंसर होची डी. Who started the American civil rights movement inspired by the Gandhian idea of Ohitra? ये स्टार्ट करते अमेरिका रे ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर. बी आंसर होची बी. Who gave this famous message, the earth has enough resources for our need but not for our greed? आंसर होची महात्मा गांधी. आंसर होची बी. Hollywood director Dash made a film titled Gandhi in 1982. आंसर होची रिचर्ड अटेनबर्ग. आंसर होची सी. Yes, also. Gandhiji's The Story of My Experience with Truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? Our answer होची महादेव देसाई. आंसर होची महादेव देसाई. आंसर होची बी. नेक्स्ट आसो. Who are the permanent member of the UN Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल जो पांचटा परमानेंट मेंबर वाले से माने किए आंसर होची बी. आंसर होची बी. फ्रांस, रशिया, यूएस, ब्रिटेन, चाइना. नेक्स्ट आसो. क्वेश्चन होची आमर एटा देखा जाउन क्वेश्चनटा आंसर आम क्वेश्चनटा होची केतोटी आमर ऑफिशियल लैंग्वेज होची केते आम यूएन रे एटा होची आंसर 6. आंसर होची 6. 6टी अछि आमर कोन ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट आसो. हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल केतोटी नॉन परमानेंट आमर परमानेंट मेंबर अछन 10 जन. नॉन परमानेंट मेंबर 10 जन. नेक्स्ट आसो. व्हिच ऑर्गन ऑफ द यूएन नाउ फंक्शन फॉर पीस प्लेस इन द हेग द नेदरलैंड जो पीस हेग रहा हेग रे जो रहा किए थिला को आमर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आंसर होची डी. नेक्स्ट आसो. द यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विथ द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड इज ला कोन? आंसर होची बी. यूनेस्को. आंसर होची बी. फ्रेंड्स एटा हमर सब क्वेश्चन सरी अछि 70 टा क्वेश्चन हमें माने कवर कर देछे बाहर कर देछे. जदि आपण मानक वीडियोटी भलो लागिछि लाइक कमेंट शेयर करिया भूलिबे नै. आ आपण मानक संग मानक सहित शेयर करंतु. आ गोटे कथा एबेठारु हापारठारु वीडियो कंटिन्यूअसली छडाबो. आ +3 +2 पिलांकर क्लास करा जिवो. तेनु वीडियोटी की संपूर्ण देखिथिबार धन्यवाद. जय हिंद.